Beginner's Guide to Option Trading. Acha, so before we start off with this video, I'll just give you a brief about what this video is. So इसमें I'll just explain options or rather how to trade in options in the simplest form. ठीक है? तो I'll avoid all the basic technical fundamentals of option. बाकी जितना भी investors या traders YouTube में हैं, the way they explain options, I'll stick to a different explanation altogether. ताकि आपको इतना मालूम चले कि how to make money in options. Okay, so let's start with a few basic technical terms and then we'll eventually move to the simpler examples for better understanding. So what are options and how do we trade them? Options are trading instruments whose value is based on the underlying asset. So underlying asset basically means any financial instrument that we trade in the stock exchange. It can be the stocks like Tata Motors, Maruti, Larsen Tubro. It can also be commodity like crude oil, steel, then silver or gold. And it can also be in form of index. So Nifty 50 is a form of index. Bank Nifty is also an index. So basically, these are the different forms of the underlying asset. Now, the value of the option, तो जो option का जो price है, that is derived from the underlying asset, like the examples we spoke of earlier. Okay, तो चलिए let's take a simple example. Tata Motors, a stock which is traded in the Indian stock market. So agar this is the underlying asset, the value or the price of the option, in this case, just let's assume it's 44. This 44 amount is derived from the underlying asset, which is Tata Motors. Achha, before we move on to the examples, let us understand the two types of options that we trade in the Indian stock market. तो एक होता है call option, which gives you the right to buy. So when you expect the price of the share or stock like Tata Motors to increase, you buy the call option. तो अगर आप call option खरीदते हो, expecting कि अगर Tata Motors अभी 300 में है, you are expecting the price to increase by 1%, 2%, 10%, whatever it is. Your focus here or your target here is to achieve a profit when the price of the underlying increases. So similarly, put option gives you the right to sell. So when you are expecting the price of Tata Motors, जो अभी 300 में है, for example, to fall, you are basically buying a put option. And आपका target ये होना चाहिए कि अच्छा चलो अभी 300 में है, by the end of the session ये price 1%, 2% या 10% कुछ भी हो, it'll fall by that percent and you make a handsome profit out of it. So let's take an example. Tata Motors हम लोग का underlying asset है. So if we are expecting the price of Tata Motors to increase और Tata Motors का बनने का chance अगर आपको दिखता है using technical analysis or your assumption, so you will buy a call option. ठीक है? Similarly, if you are assuming that Tata Motors will fall, कुछ खराब news आया है या for some reason, may it be technical, may it be fundamental, you are expecting the price to fall. So in that situation, आप एक put option खरीदेंगे to maximize your profits. तो इसमें advantage ये होता है option का, you make money when stock price will increase. आप तभी भी पैसा कमा सकते हो जब आपको लगे कि the underlying asset गिरे. तो in general terms, आप अगर डिलीवरी पे शेयर खरीदते हो तो यू कैन ओनली टेक एडवांटेज ऑफ द शेयर प्राइस इंक्रीजिंग. और यहाँ ऑप्शन में यू हैव द एडवांटेज ऑफ मेकिंग मनी इवन व्हेन द शेयर फॉल्स. Okay, so let us understand the option price and its components. तो ऑप्शन प्राइस का दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस. तो स्पॉट प्राइस की अगर बात करें हम,
it is very easy to understand what spot price is. So whatever underlying asset you choose, for example in this case हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, that becomes the underlying asset. तो उसका जो current market price है, that is the spot price. Understanding strike price is a bit difficult. So it's basically the different levels of the underlying asset at which you place your bid. Bid matlab you can either buy the underlying asset at that level or you can sell the underlying asset at that level. ठीक है? Now हर एक शेयर का या हर एक underlying asset का अलग अलग strike prices होता है. And this list is available on NSE India and you can trade on them. So because option prices will vary according to the strike price, that is why it is very important to understand आप कौन सा strike price पे आप option खरीद रहे हो. The option expiry. Now option expiry का मतलब ये होता है as in every option has a set time frame. At the end of the time span, the contract will end or close. ठीक है? Now these time frames are usually monthly in nature. इसका मतलब ये है कि let's say the underlying asset here is Tata Motors. You have bought a call option. So the call option will have a time frame. If let's say you want to trade in the month of June and you want to close your position in the month of June itself, you will buy a contract or the option, the call option for the month of June, which will expire on the last working Thursday of the month. तो इसका मतलब ये होता है कि let's say you were expecting Tata Motors to rise और आप वो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस प्रिवेलिंग प्राइस है उसमें खरीदते हो. The price moves and it crosses your strike price or you get a profit, you can close the option before the expiry or it will automatically close the contract on the day of expiry, which is the last working Thursday of the month. Lot size basically means the number of units in a contract. हम लोग कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिनोट करते हैं. Now every option or rather every underlying asset has a different lot size. Now this lot size का calculation is based on the stock's market price. और ये जो lot size होता है, this is prescribed by SEBI or the regulatory authorities of India. Okay, so we are done with the basics of options, as in we're done with the theory. So now we'll get into the core of options. So in option pricing, let's talk about how the price is derived. Now we buy options at different strike prices, or every strike price का अलग option price होता है. As in the value of options for every strike price will be different. And this option price or the option value will have two components, the actual value and the premium. An important part about options is the premium. Now we'll talk about premium in the next slides. So basically, all options have premium. And ये premium at the beginning of contract बहुत high होता है. And gradually, as we move forward and we close in on the expiry day, ये premium आस्ते आस्ते गिर जाता है. And it will eventually end up being zero. If you look at this slide, यहाँ पे I'm just showing the chart of premium from the start of the option cycle to the end of the option cycle, which is the day of option expiry. तो क्या होता है कि option का premium एक जगह से start होता है and then it increases due to volatility or news. तो इससे क्या होता है, जो option का price है या option का value है वो भी बढ़ जाता है, because premium is an important component of the options value or options price. Then eventually, as we move forward into the end of expiry, ये premium आस्ते आस्ते gradually गिर जाएगा. So one of the important aspects of option is when volatility increases,
the option premium also increases. So अगर मान के चलते हैं कि Tata Motors will announce their quarterly results in the next 5 to 4 working days, and time to expiry is 15 days. So what will happen is the premium of options, may it be call option or put option, both the premiums of these options will increase, thereby increasing our profits if we have taken position in any of those in the buy side. Now, when volatility decreases, let's say the quarterly results were out, nothing out of the blue or no special announcements were made. So in such situations, ये जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है, that will fall very sharply. तो क्योंकि और कोई बड़ा इवेंट होने वाला है नहीं in the upcoming 10 or 15 days for that particular underlying asset, इसलिए ये प्रीमियम गिर जाएगा and you will make a loss if you do not play it properly. Okay, so let's talk about how the price of the call option is derived. So let us refresh what we've learned earlier. The most important part was कि कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम स्टार्टिंग में हाई रहता है एंड देन ग्रेजुअली इट एंड्स अप बीइंग ज़ीरो. सो कॉल ऑप्शन का अगर आप बात करें तो उसका एक कैलकुलेशन होता है विच इज़ स्पॉट प्राइस minus the strike price. Spot price, which basically means the current market price, and strike price, which means the level at which you want to take a position at. तो if we take it that way, usually क्या होता है कि अगर आपका spot price अभी 296 है and all the calls above that strike, मतलब 300 हो या 310 हो, 330 हो, 320 हो, any call or any strikes above your spot में जो भी वैल्यू है बिफोर एक्सपीरिएशन वो सब प्रीमियम होता है. एंड बाय द टाइम इट इज़ एक्सपायरी और द लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी ये सब का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा. तो यू माइट आस्क कि अगर वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा देन वाई विल वी बाय द कॉल ऑप्शन फॉर अ प्रीमियम. देखिए इसमें क्या होता है कि ज़ीरो तो होने वाला है, सबको मालूम है अगर स्ट्राइक क्रॉस नहीं करता. बट द एडवांटेज हियर इज यू कैन प्ले द मोमेंटम. आप अभी 296 में स्पॉट है फॉर एग्जांपल एंड देयर आर स्टिल 10 मोर डेज टू एक्सपायरी. आप 310 का कॉल खरीदते हो. नाउ 310 का कॉल में देयर वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रीमियम. 320 का कॉल में देयर बी अ स्मॉलर प्रीमियम. 330 का कॉल में और थोड़ा कम प्रीमियम होगा. सो यू वांट टू प्ले द मोमेंटम बाय taking a position in 310, you buy the position or you buy the call. जैसे ही टाटा मोटर्स का स्पॉट प्राइस द करंट मार्केट प्राइस इंक्रीज करता है योर प्रीमियम विल ऑल्सो इंक्रीज. When it increases you will book your profits and you exit the position. So this is one way of making profits in a call option. So let's take a simple example. Let's take Tata Motors again, that being the underlying asset. आप अभी इसका करंट स्पॉट प्राइस लेट्स अज्यूम इज 296. ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस दिखेगा टाटा मोटर्स का, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 300 ऑल द वे टिल 330 एंड दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल ऑप्शन प्राइसेस विच इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस. सो 300 का है 30, 310 का है 22, 320 का है 17 और 330 का है 8. नाउ इफ यू सी that option prices are in descending order. तो आप जितना दूर जाते हो स्पॉट प्राइस से उतना कम प्रीमियम रहेगा ऑप्शन में. नाउ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि ऑल दीज ऑप्शन स्ट्राइक्स आर अबव द स्पॉट प्राइस. मतलब अगर आज का दिन एक्सपायरी होता तो ऑल ऑफ दीज स्ट्राइक्स का जो ऑप्शन प्राइसेस है वुड हैव बीन जीरो. बट सिंस देयर आर 20 मोर डेज इन एक्सपायरी ये सब ऑप्शंस का एक प्रीमियम है. 300 का 30 है एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो नाउ लेट्स अज्यूम कि आप एक एनालिसिस करते हो टाटा मोटर्स पे एंड बेस्ड ऑन सम टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स यू आर बुलिश ऑन टाटा मोटर्स. तो हाउ वुड यू प्ले दिस? नाउ व्हाट यू कैन डू हियर इज यू विल बाय
a call option Tata Motors का in a premium, which is, let's assume कि आप 310 का कॉल खरीदते हो for a price of 22 when the spot price was 296 with 20 days to expiry. So now, after 10 days, the price of Tata Motors has increased from 296 to 307. तो basically आपका Tata Motors का share 11 rupees बढ़ गया, which is a good thing because you were bullish on Tata Motors. So on the right hand side, you will see the new strikes and the new last traded price. Now since अभी भी 10 दिन बाकी है ऑप्शन एक्सपायर होने में, उसलिए आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ गया ड्यू टू चेंज इन वॉलेटिलिटी और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द स्टॉक. तो अभी आपका जो पहले 300 का कॉल था, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 36, एंड सिमिलरली 310 का जो आपका प्रीवियस प्राइस था विच वॉज 22 हैज इंक्रीज टू 27. Now, if you calculate the total profit, you will end up with 5 units per lot, which is a very decent profit. ये जो strategy है, this is followed by many investors all over India. This is called the momentum strategy. You saw a momentum, you took a play in the option, you made your profit, and you exited the position. As simple as that. Okay, so now let's talk about put options. Put options are a bit different from call options. यहाँ पे we are subtracting the strike price from the spot price. So यहाँ पे what we do is, here we look at the strikes which are below the spot price. तो अगर मान के चलते हैं कि टाटा मोटर्स इज द अंडरलाइंग एसेट एंड आपको लगता है कि टाटा मोटर्स अभी गिरने वाला है, so to take advantage of that momentum, what you need to do is look at strikes which are below the spot price. So if 296 is the spot price, you will look at 290 strike, 280 strike, 270 strike and so on so forth. तो अगर आप 280 का स्ट्राइक खरीदते हो यहाँ पे एज अ पुट ऑप्शन एंड द स्पॉट प्राइस विच इज 296, यहाँ से अगर सेलिंग आता है टाटा मोटर्स पे, देन द option price will increase for the 280 strike price because it is heading towards your target strike price which is lower. So let's quickly take an example of a put option. यहाँ पे फिर से underlying asset टाटा मोटर्स लेते हैं and now your goal is to make a profit when the underlying asset which is Tata Motors declines or the share price falls. तो अभी मान के चलते हैं कि टाटा मोटर्स का स्पॉट प्राइस विच इज 296. तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको द न्यू स्ट्राइक्स ऑफ टाटा मोटर्स दिखेगा. नाउ यहाँ पे सिंस वी आर बाइंग अ पुट ऑप्शन, we will look at strikes which are below the spot price. The spot price is 296, so we'll look at the strikes which are below them. So we start with 290 and then we'll go all the way down till 260. तो यहाँ पे प्रीमियम इज इन द असेंडिंग ऑर्डर सिंस वी आर गोइंग डाउन. सबसे ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे स्पॉट प्राइस के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस पे होगा विच इज़ 290 एंड ग्रेजुअली प्रीमियम कम होते होते लाइक लेट्स से इफ़ वी लुक एट 260, यहाँ पे सिर्फ 4 प्रीमियम है. यहाँ पे 4 इसलिए है बिकॉज देर आर ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु थिंक कि यहाँ तक गिरेगा टाटा मोटर्स बाय द एंड ऑफ एक्सपायरी. तो अगेन लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, यहाँ पे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पुट ऑप्शन, जो भी स्ट्राइक प्राइसेस स्पॉट प्राइस के नीचे है, ऑल दोज स्ट्राइक प्राइसेस विल ओनली हैव प्रीमियम. इसमें वैल्यू कुछ नहीं रहता. अगर आज एक्सपायरी होता देन ऑल दीज ऑप्शंस प्रीमियम वुड हैव बीन 0. Okay, so now let's say you want to take a short position in Tata Motors because you're bearish. आप 280 का पुट खरीद लेते हो at 19 rupees when the spot is 296 with 20 days to expiry. After 10 sessions, the spot price ends up at 284. So Tata Motors fell by 11 rupees per share. So since the underlying asset went in the direction we wanted it to go to, the price of put has also increased. On the right hand side आप अगर देखिएगा तो
For every strike ये put change हो गया. It was 28 before. For the 290 put, it has gone up to 34. Similarly, since we took a position in the 280 put, ये 19 से बढ़ के 22 हो गया, which went in the direction we wanted it to go. So यहाँ पे we made a profit of 3 rupees per unit, which is a very good thing. And this is what we call again a momentum strategy. So we are almost done with the option video. It was a pretty long video, but I hope you understood what I was trying to convey. बस एक लास्ट एग्जाम्पल रह गया which you need to understand. यहाँ पे let's understand कि कितना मार्जिन लगता है ऑप्शन में ट्रेड करने से. So let's say that the current market price is 296 Tata Motors का and the lot size is 1500. तो अगर हम 310 का कॉल खरीदते हैं which will cost us 6 rupees. So what is our investment? The total cost that we incur here is 1500 into 6, which is 9000 rupees. And let's say it goes in our direction. अगर 6 से ये option का value 8 चला जाता है, our profit will be 2 rupees per lot. So 2 into 1500, which is 3000, would be our profit. Now similarly, अगर ये against the direction चला जाता है, like let's say we were bullish on Tata Motors and the price falls, तब ये जो 6 रुपया है it will start decreasing. तो 6 से अगर 3 हो गया या 4 हो गया and let's say you want to exit the position, you want to book your losses, तो तब आपका जितना costing है minus the selling price, let's say it was 6 when you bought it and you exited the position when it was 3, तो 3 rupees per unit. So 3 into 1500 would be 4500. That would be your loss on the position. यहाँ पे maximum loss is the total investment you made at the initial option taking stage, which is 9000. Thank you for watching this video. Please stay tuned and do subscribe to our channel.